श्रुतिसूक्तरुचिरमाला शतशास्त्रसूत्रमूला ऋषिवार्यचिन्तनीया सुरभारती सुरम्या श्रीरामकृष्णलीला जनहृदयहरणशीला इह पुष्पिताति दिव्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या इह निरुपमा कवीन्द्र देवोपमा मुनीन्द्रा त्रैलोक्यवन्दनीया सुरभारती सुरम्या यो भारतस्य महिमा भुवि गर्जति गरिमा तज्जन्मदाति पुण्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या इयममितसुगुणधन्या इयमखिल विबुधमान्या सुहिताय सेवनीया सुरभारती सुरम्या 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 सुरभारती सुरम्या। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सत्र में। आई वेलकम एवरीबडी फॉर टुडे सेशन। प्रथमम शिबिर गीतम। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम वन्दे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृत मातरम वन्दे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृत मातरम वन्दे संस्कृत मातरम। अवधारणम एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अवधारणम सकारात्मक वाक्य। अवधारणम संस्कृतम अति सरला भाषा। संस्कृतम अति मधुरा भाषा। संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम। अहम केवल संस्कृतेन वदामि। अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सत्र में। I welcome everybody for today's session, and from today onwards our real syllabus starts. So yesterday had been a sort of creating all the energy for interaction. आप लोगों को कल जो सत्र था, कल का सत्र जो था वो किसके बारे में था, ताकि आपको उत्तेजित किया जाए कि हम परस्पर बातें कर सकते हैं। एट प्रेजेंट आप लोगों को मैंने म्यूट किया हुआ है। I will unmute you everybody. Yes, Harsha ji, namo namah.
सभी लोगों को नमो नमः व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं। तो प्लीज हम अपने चैप्टर की तरफ चले। नाउ टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, द लैंग्वेज ऑफ व्हाट इज संस्कृत। तो उसके पहले यस्टरडे के बारे में अगर किसी को डाउट है तो आई एम नाउ अनम्यूटिंग एवरीबडी। सो अभी आप सभी लोगों का माइक ऑन हो गया है। आप लोग चाहिए तभी आप हाथ ऊपर कीजिएगा, ऑन कीजिएगा और प्रश्न पूछिएगा। यस मिस्टर कृष्ण मूर्ति जी, यू हैव एनी क्वेश्चंस? योर माइक इज ऑन महोदय। No, sir. No, no, no. I just प्लीज कंट्रोल योर माइक। इट हैपेंस बाय मिस्टेक, सो आई डोंट, प्लीज डोंट टेक इट टू योर हार्ट कि भाई मैंने तो गलती से हो गया। नो प्रॉब्लम, इट हैपेंस, बट माय ड्यूटी इज टू लेट एवरीबडी नो दैट यस योर माइक इज ऑन, प्लीज बी केयरफुल। नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट इज लैंग्वेज। Like any other language, Sanskrit is also a language. Now, what is the definition of a language? A instrument, or I would put it, it is an instrument of communication. यानी परस्पर बातें करने का एक साधन है। भाषा हमेशा एक साधन का रूप लेती है। Whatever you want to express through your language, your mother tongue, or the language that opposite person understands, you communicate with him. That's a language. Well, how did language actually originate? From where did it originate? How we humans started communicating with each other? This goes long back to the time when human beings were evolved. तो यहां पे एक बिकॉज बीइंग अ इंटेलिजेंट बीइंग, हमारा दिमाग काफी तेज था, बट वी हैड अ प्रॉब्लम, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक। आई कैन सी अ पर्सन लाइक मी, सेम लाइक मी, नॉट एज इट इज, नॉट द फेशियल, बट अ ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आई कैन नॉट कम्युनिकेट विथ हिम. So being they were ancient and they used to live in jungles and caves and all that. So they started understanding that yeah, birds, when they make a particular sound, there is a response from other bird of the same species, or all the birds, they communicate within themselves, whether they are of the same species or not. They can understand what this, say for example, a crow. एक कौवा है, अगर कौवा आवाज निकालता है, if a crow makes a sound, the surrounding all other species also used to get the message what he wants. Means यानी क्या होता था, कौवे की आवाज से बाकी के पक्षी भी, केवल कौवा नहीं, कौवा एक उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है, लेकिन कौवे का आवाज सुनते ही बाकी के पशु भी, पक्षियां, पशु नहीं पक्षियां, उसको रिस्पॉन्ड करते थे. यानी कोलाहल, कभी कभी कोई आवाज से कोलाहल हो जाता था पूरे, मीन्स देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ नॉइज. आफ्टर वन नॉइज इज मेड, देयर वर सम कम्युनिकेशन. सो दैट इज हाउ, because the caveman could observe the bird, because birds are very safe, they stay on a tree, पेड़ पे बैठे हैं और मनुष्य बैठ के उनको ऑब्जर्व कर सकता है. बट रिगार्डिंग एनिमल्स, यू कैन नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ अ लायन एंड ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट ही इज बिहेविंग, व्हाट साउंड ही इज मेकिंग. यू कैन नॉट डू दैट. दे आर वाइल्ड एनिमल्स, दे कैन अटैक यू, दे आर फास्टर. तो ये अंतर की वजह से the first thing was the indication of the birds. That's how our initial communication system started. Then the human brain started working. Yes, this is something which is important. That is sound. So they started making a sound within a group. एक छोटा सा group. We are a social animal. So as soon as our evolution was formed, from that onwards, we humans have been staying in a group. एक समूह का, हमारा सामाजिक हम लोग है, प्राणी है, हम सामाजिक प्राणी है. तो हम समाज यानी अपने एक गट के साथ रहते थे. तो उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई, एक आवाज की ध्वनि बनाई, जिसके वजह से भूख लगी है, खाना खाना है, या कोई आपदा है,
koi danger, in case of some danger, or if that person is hungry, that they used to make a particular sound and accordingly the other person used to understand. वो दूसरा आदमी समझता था और अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करता था. ठीक है, यहां तक ठीक है. Till this point it is okay. But the problem started when one guru could not communicate with other guru. Why? Because one group was following a particular pattern of sound, which other group were following another pattern of sound. So there was no standardization. एक समांतर नहीं थी, क्योंकि एक गट एक आवाज एक ध्वनि को समझते थे और दूसरा गट दूसरी आवाज और दूसरी ध्वनि को समझते थे. तो वहां पे एक समांतर ये मंच नहीं था कि जहां पे वो समझ पाए कि ये क्या कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है. सो ऑल डिसाइडेड, लेट अस कम टुगेदर एंड क्रिएट what is called a uniformed sound system so that we can communicate with each other. That's how must have started, and that is what many books are written on over the evolution of sound and all that, or languages and all that. Usme dikha. So they started symbolizing with a particular bird, and they started cave painting, यानी cave carving वगैरह होता था. तो cave carving was a classroom. So they used to make a particular symbol, एक निशान बनाते थे, and they used to make a sound. So this particular nishan, this particular symbol means this sound, and this sound means so and so thing. So they started. So the initial stage pe, the first alphabets were the cave carving. But then again, as the world was expanding, this started facing lot of challenges, lot of problems. So slowly and steadily, there was a standardization. Let us, this is a Sanskrit class, ये संस्कृत का वर्ग है, तो हम केवल संस्कृत की बातें करेंगे. We will talk only as far as Sanskrit is connected and this thing. So originally, when Sanskrit was defined, or rather the alphabets were defined, or Sanskrit ki, there was a systematic study that went on with a group and many Rishi Munis putting their inputs. During that process, a Vedic Sanskritam was formed. So Vedic Sanskritam, during that time, it is said so, it had more than 256 alphabets. What is alphabets? Alphabets are the symbolization of a sound. एक अक्षर जो होता है वो एक ध्वनि को प्रतिनिधित्व करता है. यानी अक्षर का मतलब होता है वो एक निशान है जिसको देखते ही आपको पता चले क्या है करके. जैसे क देखा तो मैं अगर क देखूंगा तो आई विल से क. Like for example, if an Englishman says H, he will say H. The pronunciation of that particular A. So he will say A when he sees that particular alphabet. So that was symbolization of the sound. So during Vedic Sanskritam, there were around, or more than rather, there is a debate over the things, 256 alphabets. But then for a human brain, to remember all 256 alphabets and the related sound sometimes started becoming difficult. And it was making the whole process quite slow. वो पूरी प्रक्रिया को धीमा कर रहे थे. गति उसकी कम हो रही थी. क्यों हो रही थी? क्योंकि 256 अक्षरों को याद करना और उसके अनुसार उसका आवाज की ध्वनि को याद करना थोड़ा कठिन होते गया. So that, but even then, the stotra, the Vedic Sanskritam was very famous. But as the time went down, the difficulty of remembering those sounds and alphabets became a question mark. So thereafter came down is Devanagari. Devanagari is the alphabet which has many alphabets of Vedic Sanskritam. तो ये जो देवनागरी आई,
That is called, I would put it, which is the Sanskrit we understand now, or we are teaching now, or we are talking and understanding that Sanskritam, which we would put it, a point is classical Sanskritam, classic Sanskritam. This is modern Sanskritam, after Devanagari was formed. So Devanagari, they curtailed the whole sound system systematically into around 56 major alphabets. Major alphabets, 56. And there were variations accordingly after joining two different alphabets and all that procedure. जिसे जोड़ अक्षर कहते हैं, combined alphabets and all that, there are rest of them. But the major part was 56 first alphabet. Now there were 4 languages which follow Devanagari script even today. Even today. First is definitely Sanskritam. Second is Hindi, Marathi, and Nepali. They are having, their way of writing might be a little bit different, but they follow Devanagari. That's for sure. So there were 4 languages. Rest of the languages came in a different format altogether. So they are not coming under the category of Devanagari. So this is the major thing. But in this 56 alphabets, and there was one more element which was added, which we are going to learn, and due to which we could attend, with the small number of alphabets, we could attend nearly all the pronunciations of that 256 or plus alphabets, all the sound. यानी उन्होंने क्या किया? They used their intelligence and started compressing the whole thing and making it easy to understand and easy to think. Well, friends, till this point it is okay. But then the world started expanding, and internationally everywhere, English, French, Spanish, Anya Bhasha, they started creating their space. So then it was difficult again for some part of the people, like Western people, many of them of Eastern people, say for China and all, Russia and all that. They found it difficult to, because they did not have the base of Sanskritam, so they did not understand Devanagari. Yes, Sanskrit, I would put it, it is the oldest language. But yes, there is a debate over Sanskrit and Tamil. I don't know the real fact. So let us not get into that controversy. As a language, we respect all the languages, including Tamil as well as Sanskritam. But when we are talking about Sanskritam, let us talk about Sanskritam. So Sanskritam being that thing, it is considered to be mother of all the languages. Yes, because thereafter, after Sanskritam, it took around, they say 11,000 years to create another set of language, that was Hebrew. और उसके बाद उसका डिस्टिंग्विश होते होते बहुत सारे लैंग्वेजेस बने. Thereafter many languages were created. So mother of all the languages, yes, because you will find quite similar words or rather Sanskrit words in a different pronunciation or different accent in other languages. But every alphabet has a particular sound, isn't it? Now, when we are into a class to learn Sanskrit, we have to understand the proper phonetics. The beauty of any language is the phonetics, whether you are learning French or Spanish or English, or whether it is Sanskritam, yeah, Hindi, Marathi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, any language overall. Whatever language you are learning or you are speaking, if you are using the right phonetics, the listener will enjoy what you are saying. So it is something like, I am a Gujarati, so we have, accent. So we Gujus speak all the language in Gujarati, including English. It is a joke that is said, but it is so. We have our, that was what I wanted to show you, yesterday's video and today's video. I suppose everybody heard the today's video as well.
आप सभी लोगों ने आज का वीडियो देखा? हाँ या ना भाई? सब Yes, लोग sir. yesterday also you saw that the video? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yesterday's video was sung by very famous Dr. Rajan. He's a wonderful singer, very popular singer of Assam. And today, the song was sung by a Irish girl, Gabriella. But if you observe, yesterday if you close your eyes, you can easily understand the singer is either from West Bengal or he might be from Assam. But today's video, if you close your eyes, you will be surprised. When you open your eyes, you will be surprised. The person singing in front of you is not of Indian origin. Why so? Because all respects to Dr. Rajan, please, all respects to that singer. So, but it is only making a differentiation. He has not pronounced anything wrongly. He has pronounced it rightly. But even then, the local accent was influencing his Sanskritam. Local accent. And when today's singing, the local accent or her mother tongue language accent was not reflected. Am I right or wrong? Did you all observe this? क्या हुआ भाई? मेरी आवाज आ रही है? Can you all hear me? What is happening? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आ रही है. तो जवाब भी दीजिए. हाँ, yes, घोष बाबू. घोष भगिनी. Mahoday, there was a little bit of an accent in her pronunciation as No, well. after you saw it. After you saw it. No. Yes, maybe. If as a Sanskrit speaker, if you ask me, I would put it, there was no influence. I will give you one more example that has practically happened with me. Gabriella is quite known to us. She is our family friend. She does visit and she talks only and only in Sanskritam, in whichever part of the world she is. See, you will be surprised. I have visited Ireland, so I know about it. You will be surprised if you talk in Ireland, if you talk in Sanskritam, there are chances that the opposite person will respond to you. Yes. There is a St. James School in Ireland. Now it has been established world over. That St. James School has two divisions. One, they teach the whole curriculum in English, and another is totally curriculum in Sanskritam. Yes, Lakshmi Prabha, go ahead. Yes, sir. I know about it because I have seen a lot of videos of them, and because I was the Cambridge curriculum offers Sanskrit in the Now 10th every university is now making it a compulsory. Even the central government has made compulsory, not Indian because of Modi. Internationally, each and every university is now creating a different department of Sanskrit. Yes, yes. I had explained yesterday what was the reason. If you want to know blockchain technology, which is the now next generation computing, you have to know, you must know the basics of Sanskritam. And okay, let us not get into that. Now taking into account, the local accent should not reflect. Yes, that is the beauty of the language. And that is how you will do that. There is no problem. There are few words. Some people might find it difficult at the initial stage. But make it a point, as and when you are traveling, means aaj se to journey shuru hui na. You have started your journey from now. So slowly and steadily, once you reach at a higher level, start to talk in that own literal phonetics. I will be explaining the phonetics. So now the problem came was, Devanagari was not known to everybody.
So in 1900, year 1900, the first script that came, which was giving you the phonetics of Sanskritam in Roman language, that came in the form of IAST script. What is IAST? International Alphabets of Sanskrit Transliteration. What is transliteration and translation is different. Translation means whatever I say, जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूं, the same thing I will be talking in English. That is translating. But transliteration is literally that word written in Devanagari to be written in this thing. Nowadays, हम लोग in WhatsApp also we type it in English, but when you read it is Hindi. What we call it? English. ये नया define हुआ है. That is transliteration. So it was been researched by some Western people. There was some selfish motive behind that, and that was to understand the Sanskrit phonetics in its pure value. देखिएगा, please mind it. Don't take it easily. Learning language, I can easily teach you all Spanish or French, because there you have to just mug up the sentences. But as I said yesterday, I'm not going to make you all parrots. You have to understand the essence of it. The reason is the more you understand, it will come from your inner side. Because it is a divine language. It is a language which every language has a energy power, but specially no other language is tested. But yes, Sanskritam has always been tested on energy point, and we also have observed that whenever we hear, just hear some beautiful group of people chanting a stotram, we get fascinated. We have that vibration. We feel the vibration. होता है ना, सभी के साथ हुआ है. कहीं पे ध्वनि चल रही है, कहीं पे स्तोत्र पठनम चल रहा है, और एक लोग केवल सुनने से ही आपको अंदर से कंपन और एक ऊर्जा उत्पन्न होती है. Because it is purely based on science and it is an energy balancing system. It is playing with the energy, I tell you. So absolute phonetics is very much important. There are no slang languages. I wanna go. I wanna go. अभी yeah, I wanna go. I don't know. Great आजकल कैसे लिखते हैं? GR8. Great. But that cannot happen in Sanskritam. You cannot do that in Sanskritam. Because whatever is written is spoken, and whatever is spoken is written. So if you are saying great, it has to be written great. You cannot write GR8. So we are, as a human being, we are making a language slang. But if you really want to enjoy Sanskritam, don't make it slang. That's the reason. Now, not only internationally, but in India also, our southern part of India are really unaware about Devanagari. To tell you very frankly, I am staying in Mumbai, which is a Maharashtra state. I am surrounded by Maharashtrian people. I can speak comfortably Marathi, but even then I had difficulty in understanding Devanagari alphabets or words. I had earlier. After learning Sanskritam, after 2016, I became much more comfortable with Devanagari. Not before that. Because my medium of education was English. मैं अंग्रेजी में पढ़ा हूं, मेरे लिए देवनागरी भी चैलेंज था. So there are people. That's the reason the first organization which took up the importance of IAST was ISKCON. So ISKCON के जो भगवत गीता वगैरह रहती है, the श्लोक्स are again written below in IAST script. Now the problem happened was nobody took the importance of IAST to the public, like teaching the phonetics of IAST to the public. And I'm proud to say
by Ma Saraswati's blessings, it struck me that even IST, teaching IST is equally important. If I'm teaching Devanagari, there are people who cannot understand Devanagari. That does not mean you cannot learn Sanskrit. Yes, Prabha, Lakshmi Prabha. Can Go you ahead. please tell me the full form of IST again, sir? I said International Alphabets of Sanskrit Transliteration. Okay. Now, don't try to Google it, because you will find only the definition. You will not get the phonetics of it. Yes, I know. So, we are the first organization, rather our, with the help of you all, huh? Definitely. क्योंकि ये जो परिवर्तन हुआ है, the changes that has happened, those who are very old students, they might understand. I used to never use the IAST before. But later on, as the students, they join, and I understood that there are many South Indians who have difficulty in understanding Devanagari. So they are resisting themselves to get into Sanskrit classes. So making them comfortable, I took the importance of IST, and for that, there are 3 videos already available on our YouTube channel. That is IST part 1, 2, and 3. They are short videos. Only one video is 40 minutes. The rest of them are less than 30 minutes. That is where I am teaching them IST and the phonetics, sound of it. We are going to learn over here as well, but definitely go through that video, and in the description, there is a link for the PDF file. There are 3-page PDF file that you can download, take a printout, and practice your IAST also. Even if you know Devanagari, अगर आपको देवनागरी आती है तो भी आप IAST को अध्ययन कीजिएगा. Buy one get one free, है ना? Learn Sanskrit as well as IAST. So ये सब add-ons है which you are going to have the benefit of. Now understanding this part, is the point very clear about Devanagari? Abhi, every language has a set of alphabets. The set of alphabets are called Varna Mala. They are called Varna Mala. What does Varna Mala mean? Varna Mala means alphabetical chain. Now you see below I have written everything in IAST. In all my slides you will find IAST. So what is N and underdot, A overline, L, and then again A overline? I will be telling you. Don't worry. This all will be taught to you. So you will be comfortable not only with the Devanagari but also with IAST. This is, I got a very good response after I have introduced this from international crowd. So, especially American, they say that now our children are comfortable understanding. And I am going to create a different series of all videos only based on IST. I will not be using Devanagari. I will be only using IST. So that is for the benefit, isn't it? It is required. If we are taking the mission, Mukhe Mukhe Sanskritam, then make it easy. We cannot sit that nowadays children are only playing on the mobile, playing games and all that. You just खाली खेलते रहते हैं मोबाइल में. अरे ये प्रश्न का उत्तर नहीं है. That is not the answer. If you want to address the problem, create a good gardens, good playing area, safer playing area, playgrounds बनाइए. Teach them this ground-based games also. No one is interested. They only want to criticize. My children are nowadays, the modern generation is busy playing games on the mobile. What they will do? We have never given them options. Give them the options and you see they will shine. They will shine better than us. So here, every language has a set of alphabets and that is called alphabetical chain, or in Devanagari we will put it Varna Mala.
Varnamala. Now this Varnamala is been broadly divided into two segments. First, there are set of Varnamala. Thereafter, they are broadly divided into two segments, and they are the segments I would put it are: number one is vowels. What we call it vowels, यानी swaraha. So one segment are called swaraha. उसका मतलब होता है vowels. Now the rules of vowel might be different in every language. The importance of vowel or application of the vowel might differ language to language. I am not concerned. I am concerned with the Sanskrit. So as far as vowels, if I say, don't get into the mind of A, E, I, O, U. वो vowel है, वो English में है, not in Devanagari. Devanagari has a different set of vowels. And there is a different definition for a vowel. So vowel is one set of alphabet, and the other set of alphabet are called vyanjanani. So these are in plural form. Swaraha, 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 vyanjanam, vyanjanani, vyanjanam, vyanjanani. These are the plural format, because there are many words. Now, first of all, we are going to consider is vowels. We are going to consider is vowels. There is a sutra for vowel. There is a formula. Swa rajante te swaraha. Swa rajante te swaraha. What does this mean? The alphabets which are independent by itself, complete by itself, come under the category of swaraha, that is in English vowels. यानी जो अक्षर, जो वर्ण अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है, उसे स्वरा के स्वरह कैटेगरी में डाला गया है, यानी स्वरह कहा गया. Sir, just a moment. Do you mean there are alphabets which are not complete? Yes. That we will see later. उसको बाद में देखते हैं. We will go step by step. I will cover everything, but step by step. क्या हो जाता है? I tell you one more technique to understand. See, we are human brain. हम मनुष्य का दिमाग है. ये मनुष्य का दिमाग है ना, we have a tendency, when somebody is saying, you start thinking more about it. यानी when he is talking, you think something else. So as a result, you don't understand this point and you are confused with the future thing. Don't do that. इसको क्या कहते हैं मालूम है? ट्रेन के आगे दौड़ना. If you want to reach Delhi faster, will you run in front of the Rajdhani Express? Is it possible? हाँ, राजधानी एक्सप्रेस के आगे दौड़ोगे तो क्या दिल्ली जल्दी पहुंचोगे क्या? सो व्हाट इज द स्मार्टर वे? कोई बताएगा मुझे क्या है स्मार्ट वे? हरे कृष्णा सर. हरे कृष्णा. क्या है गाड़ी में स्मार्ट वे? हाँ, तो प्लेटफॉर्म पे रुकोगे. हाँ, बिल्कुल. तो प्लेटफॉर्म पे रुकोगे ना. यू विल स्टैंड ऑन प्लेटफॉर्म, wait for the train to come, sit in the train comfortably and let the train move at its own speed, right? Safer way. So don't try to judge the things before it is taught, because this is, as a human tendency, I don't blame you all. I did the same mistake. मैंने भी वही गलती की थी स्टार्टिंग में, and due to that मैं एक खड्डे में गिरा. Due to that I had faced quite a time gap to understand Sanskritam. At least I will not allow you to fall in the same pot, isn't it? Same hole. वही गड्ढे में मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गिर चुका हूं. तो प्लीज बी कनेक्टेड विथ व्हाट आई एम सेइंग.
So now coming to our subject is, there are two categories, Swaraha, Vyanjanani. So now taking Swaraha, पहले हम Swaraha को लेते हैं, बाद में Vyanjanani देखेंगे. पहले Swaraha. So what is the which alphabets are characterized under Swaraha? वो कौन से अक्षर है जो स्वर के कैटेगरी में आते हैं? तो सूत्र है, सूत्र. There is a formula. What is the formula? स्वराजन्ते ते स्वराहा, जो अपने आप में परिपूर्ण है. I am repeating again and again because it is a very important aspect to understand. The alphabets which are complete by itself, independent by itself, they fall under the category of Swaraha. Most of us, we all know there are Swaraha in Hindi, Marathi. Those who are Hindi, Marathi, Devanagari aware, so they will say, अरे सर पता है. पता तो है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कितना है? क्योंकि आपने, अगर I being a Gujarati, if I know Gujarati, that does not mean I have mastered Gujarati. है ना? Because I really do not know the real essence of Gujarati. So first understand the essence of Sanskritam and then try to go ahead. Now going ahead with our topic is Swaraha. Now we are going to talk about what are vowels. So first set of vowels are A, E. Once again, A, E, U, Ru, Rnu. Now here I will make it a point. Number one is, this is not Ri. It is Ri in Hindi, but not in Sanskritam. In Sanskritam it is Ru. And this is Dirgha, means long. Ru. So what is the alphabets? A, E, short one, E, U, Ru. अभी यहाँ पे काफी लोग मुझे एग्जाम्पल पूछ रहे हैं. Many of them, they ask me example of Ru. So the first one, you can say Rutu, short one, Rutu. Rutu means season. My daughter-in-law's name is also Rutu. So Rutu. And Dirgha one is Rushi. It is not Rishi. It is Rushi. A, E, U, Ru. और ये येलो में जो दिख रहा है, that is Rnu. But there are practically no words in Sanskrit, spoken Sanskritam, where this alphabet is used. Hardly one alphabet, and that is Ru itself. उसका मतलब होता है the earth, पृथ्वी, Ru का. लेकिन it is an alphabet also. So here we are putting in yellow color because we don't use that alphabet in spoken Sanskritam. But yes, you will find this alphabet in Stotra, because this is directly the alphabet that has come down from Vedic Sanskrit. So there you will find it, but not over here. And even there in Stotram also, very few words are there which have this particular alphabet. So Ru. This is one of the things. हाँ, बोलिए घोष. पूर्वी वदतु. महोदय, कृष्णा, not Krishna. कृष्णा आएगा when we नहीं, will आपने वो एग्जाम्पल उसका बोला हाँ, ना, लेकिन वो तभी देखेंगे जब ये आएगा. क तो नहीं लिया है ना मैंने. But you are right. लेकिन let us wait for some time. ये कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्रेन के आगे दौड़ना. This is one of the example. ट्रेन के आगे दौड़ना. Because when I was teaching this, you are right, absolutely. हाँ, पूर्वी, you are right, absolutely. लेकिन concentrate what I am saying. I will touch that point. I will not let
the things have a gap. Huh? Don't worry. I want to train your brain also, because I find that you are the person. There are few of them that I have spotted yesterday, which will learn Sanskrit very fast. And Purvi is one of them. नहीं, क्षम्यताम नहीं, भगिनी. It is not your mistake, yaar. Even I used to do the same thing. But my work is to control you, ना. रुको, है ना. मेरी बहन हो भाई. हाँ, लक्ष्मी बोलो. Rushi is also small ru, na? Or No, it is dirgha, long one. Dirgha. Rushi. It is not rishi. When we say rishi, वो री आ गया, वो हिंदी में आ गया, ऋषि कपूर. But if you want to write, pronounce his name in Sanskritam, you will say Rushi Kapoor. So it is small dirgha Rushi. Yes, 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 yes. Rushi. तो ये हुए अल्फाबेट, वन सेट ऑफ अल्फाबेट. ओके, दे आर नॉट कंप्लीट. सो वंस अगेन, अ आ, ई उ रू रू. नाउ let us understand the other four. A, I, O, औ. A, I, O, औ. Did you see the ये मेरा फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं? A, I, O, औ. Did you see my facial expression? Everybody observe? अरे इसी के लिए तो मैंने मुझको मुंडा दिया यार. Only for this lecture I am shaving off my mustache also, so that you all can clearly see my lip movements, which is very important, because the lip movements are going to create that thing, you know, how to pronounce. But आप अगर नॉर्मल मेरा फोटोग्राफ देखो तो ओके, यू हैव अ लाइट मुस्टैच और समटाइम्स वेरी हैवी मुस्टैच. लेकिन ये इसके लिए, एम आई राइट? अरविंद चौहान जी यहाँ पे है, वो मुझे मिले थे एसएनडीटी के एक फंक्शन में. तभी उन्होंने बोला कि अरे सर आपकी तो काफी बड़ी मुझे है. हाँ, ये सीके महोदय wanted to say something. Yes, CK, yes, go sir. on. You're more handsome with mustache, sir. I look handsome. Yeah? I look younger, Yeah. isn't it? But Yeah, my grandson does not like. He does not like. He says, करते रहता है. तो मैं बोला रुक जा, 2 दिन में वापिस आ जाते हैं. I have a very fast growth. But especially for this 2 days, I have to literally go and shave it off. Now coming to the point is, A, I, O, औ. A, I, O, औ. Thereafter, aha. Aha. A, I, O, औ, aha. So, what are the alphabets that come under the category of swaraha? A, I, U, ru, A, I, O, औ, aha. These are the 15 alphabets that come under the category of swaraha. Now, this particular category is again subdivided. ये जो है 15 अक्षर, इसको भी और आगे विभाजित किया गया है. They have been, subdivided into majorly 4 categories. What are those 4 categories are very important to understand. Okay. सबसे पहले, if we take is, before that, let me continue with the phonetics of the IST. See, so it is only A. So IST, in other words, is Romanization of Sanskrit alphabets. इसको Roman. Condition number 1. There are no capital uppercase alphabets IST में नहीं होते. They are all lower case. यानी सबके सब छोटे रहते हैं.
हाँ, तो ए इज ए, आ ए के ऊपर ओवरलाइन, ओवरलाइन, ओवरलाइन मीन्स यू हैव टू एक्सटेंड, दीर्घ बन जाता है। तो आ, ई इज जस्ट आई, हम छोटे में आई लिखते हैं ना, आई, वो आई है। एंड ई दीर्घ वन, ऊपर का डॉट निकाल देते हैं एंड दैट गिव्स द प्लेस ऑफ दीर्घ, ई। सिमिलरली ऊ, यू एंड ऊ दीर्घ क्या बनेगा बताइएगा कोई? विल एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द दीर्घ ऊ? The line will be there over the U. आर यू श्योर? Yes, sir. नहीं, थिंक इट ओवर, बिकॉज दीर्घ मीन्स लॉन्ग वन। Long one. हाँ, इट विल हैव लाइन अबव। And it will Yes. be down. Yes, Yes, you are yes, sir. right. Yes, sir. Yes, Yes, you are sir. right. मैं तो गूगली डालूंगा ना, यू डिफेंड योर विकेट ना, यू बी श्योर अबाउट योर शॉट। Okay, sir. Okay. अगर गलत हुआ तो किधर इधर आई एम गोइंग टू से एनीथिंग यार, कम ऑन, मिस्टेक तो होती है, एंड मिस्टेक शुड हैपन बिकॉज मिस्टेक टीचेस यू अगेन। सो हियर यू Yes, आर sir. राइट, Yes, sir. यू के ऊपर लाइन ऊ, similarly ru. Now here there is a r under dot. Why it is so we will learn later, but when you pronounce ru, your tongue is vibrating, ru, ru, vibration हो रहा है, your tongue is touching the upper part of your palate, ru. That is the reason it is under dot. Similarly, dirgha one has a under dot because it is ru, but it is dirgha. So ru, 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 rutu, rushi, rutu, rushi, rushi. So that is how this is overline. Similarly, ru, L and R under dot. Okay, and now A, I, O, O. A, I, O, O. So A is represented by E. I is represented by A, I. A and I together will be representing I. And O is just our English O. And O is again A and U. A and U. None of this four alphabet had overline. Did you observe? None of them had an overline because they are all short. Okay, going ahead. Aha. So is this dot. This particular dot comes over the alphabet. The dot over the alphabet is as a category. We will be learning about the category, and it has been adopted from the Vedic Sanskritam. So this is an alphabet. तो ये तो एक अक्षर है, अक्षर है तो sound है. If there is a alphabet, then there is a sound. So what is the sound of that? It is half m. When we say m, our lips open. M, ma, 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 ma. But this is half. तो क्या होगा? Pigeon sound. कबूतर की आवाज. It is represented by M under dot. तो अ के साथ जुड़ा तो so that's the reason it became and now concentrate over here is double dot. This double dot is also alphabet in Vedic Sanskritam. But what is the sound of that? H. H is her. Her is H. Okay. So her. Now this her, you have to stop it in between. When you are pronouncing her, actually you are throwing the sound.
अभी ये जो है इज you have stopped in between. Inside your mouth, you have stopped. Ha. Ha. So, visarga. Ha. Aha. Aha. Ha. Ha. So, aha. Am I clear, everybody? Till this point, am I clear with the phonetics? Yes, sir. Yeah. Now Yes, going sir. ahead, now going ahead is these alphabets, this particular Varnamala are now subdivided. Now, what are the subdivisions? Let us see. The first subdivision is very common, and that is Rasva. Rasva, Rasvaha, Swaraha. Rasvaha means short. Short, या हम इसे हिंदी में कहेंगे अल्पश्वास. अल्पश्वास means short breath. A, I, U, Ru, Ru. A, I, U, Ru, Ru. Alpaswas, short one. This is the first category having 5 alphabets. Second alphabet is Dirgha Swaraha. Here, there is a mistake in this spelling. It should be D. Okay, it is not short D, it is long D. Actually, I am really sorry. The earlier batch, one of the participants had argued on the spelling of this, and I got a little bit upset, and I said I have done this thing through study and all this thing. But later on, after the lecture, I realized that it was my mistake, not his mistake. I am definitely going to apologize him tomorrow. I am definitely going to apologize him tomorrow. So there is a spelling mistake over here. Okay, please allow me. Now, Dirgha means long. Dirgha Swas. These are called Dirgha Swas, means long breath. A, I, U, Ru. A, I, U, Ru. यहाँ पे नीचे देखे IST में every alphabet has a overline, है ना? Easy. IST is not a difficult thing. It is easy. This is the second category having 4 alphabets. Thereafter is A, I, O, Au. They come under the category called Sanyukta Swaraha. Sanyukta Swaraha. What does Sanyukta mean? Combined. यानी दोनों को संयुक्त किया गया, जोड़ा गया है. Now, interesting part. Just remember, what is the definition of swaraha? Swa rajante te swaraha. Here, a and e, they are both are the vowels. A and e. When they come together, it forms I. A and E, A. Now this has become a complete independent alphabet. ये अपने आप में एक स्वर बन गया. Now adding a again to this alphabet, E, will give you I. I. So A, and when you are adding a, it became I. Similarly, a के साथ U जोड़ा तो O. Now this O is a complete alphabet. With that, when you add, means it has become swaraha. Now when you add a with that, it will become au. Au. Spashtam va? Am I clear? स्पष्टम अस्ति महोदय. Yes, sir. अभी इसको IST में, in IST format, try to analyze this alphabet. Did you see? There is a short E, I, E था ना, short E, A. So both together gave you A. I. Now I. Now A के साथ A जोड़ा तो बन गया A, I. Now you have added A ना, तो दीर्घ बन गया, लंबा हुआ. Similarly, O and Au, if you observe.
So when you are adding additional a, here also there is a effect in IST. You are adding another a to it. Am I right? इसको भी एनालाइज कीजिएगा, इंटरेस्टिंग है. And once you are comfortable with this, you can start writing. And I tell you one thing very frankly, nowhere in the world there is a type available for IAST script. No keyboard is available. So these are the alphabets that I have practically made. And after that, one of our participants who is expert in fonts, creating fonts, and he's a licensed person to create fonts. And there are many fonts that are available. You have to buy them. And he creates it. He created a keyboard for me, especially for IAST. I am thankful to him. We all should be here, isn't it? So due to that, this thing has happened. And that is how we are going together. Now, going ahead with our... This is the third category. Now the fourth category is Ayog Vaha. In Ayog Vaha is the format of category. So which was the first one? Rasva Swaraha, Dirgha Swaraha, Sanyukta Swaraha, and this is the fourth one, Ayog Vaha. Now what is Ayog Vaha? It is a category. Now in category Ayog Vaha, there are two alphabets. Two alphabets form under Ayog Vaha. And one is, this is the first one, A. Okay. And this is a dot over it. This particular dot has a sound. And as we said, the sound is So this dot has come from the Vedic Sanskritam and it is called Anuswaraha. Remember, Anu Swaraha. Anu means minute, Swaraha, minute sound. So, is a minute sound. Is a minute sound. It is not a loud sound. Is a minute sound. So, Am I right? Now the second and the last alphabet that comes under Swaraha is double dot. So and this double dot. Now interesting, this double dot has a sound. But before that, let us understand what is this called. It is called Visargaha. Visargaha. It is called Visargaha. And what is the sound of that? The sound is half ha. So it is ha. So ha. Ha. So what is this? Aha. 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 Am I right? Everybody are connected? Everybody are connected? Aha. Yes, Now, Purvi, very highlight. Huh? Those who are doing yoga abhyas, did you all realize it is creating Brahmari? Yes, sir. Huh? Brahmari. And Visargaha is creating Kapalbhati. Am I right? Right, sir. So just imagine, yoga abhyas is for your physical fitness, and speaking Sanskritam creates the fitness inside. It is an internal fitness system. How many of y'all have heard about Mahadevan ji, the singer, the very famous singer? Breathless गाना गाया था उन्होंने. Breathless गाना गाया था. Shankar Mahadevan. Shankar Mahadevan. Breathless गाना गाया था. You know how he described? It was not breathless. He was breathing in between. And how he was breathing, that is with the help and the location of a particular alphabets and the order of the alphabets. Like for example, in short, I will put it, it is 2 और 2 5 में था गाना.
तूने मुझे देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, अभी पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरे मेरे पीछे पीछे भागे, किसमें दम यहाँ ठहर जो मेरे आगे आना नहीं, मुझसे टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम. If you put the lyric of this in order, you will find that is Anuswar Visargaha, Anuswar Visargaha, Anuswar Visargaha. There is a format. And that's how you breathe. So this is how you can do it. मजा आया? कुछ अच्छा लग रहा है ना? 2 और 2 5 याद आई है ना हमें? क्योंकि हिंदी फिल्म थी इसलिए 2 और 2 5 अपने बॉलीवुड फिल्म 2 और 2 4 ही होता है. Anyways, let us go ahead. Now, how many categories are there in Swaraha? Can anybody answer? And name them, please. 4 categories. Rasva, Dirgha, Sanyukta Swaraha, and the last Ayogvaha. Ayogavaha. Ayogvaha. These are the 4. Well, we have covered all. But wait, my dear friends, there is a 5th category also. But sir, there is no other alphabet remaining. How can there be a 5th alphabet? 5th category. Let us check it out. Interested? Now, the 5th category is called Plutaha. Before that, let me continue with this point. I am sorry, it was in that, I forgot. Now, this particular Visargaha, ha, is related with the alphabet that it is attached. If it is Akarant, means A, short one, short alphabet, A, then it is Ha. But if it is, for example, Ka के साथ जोड़ा है, तो Kah, 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 Balakah, Balakah. But if it is attached with Dirgha, Ka, this will become Ha, and half of Ha, that will become Ha. So, Ka, Ha, Balakah, Balakaha, Balakah, Balakaha, Ha हो गया उसका. And now if it is attached with E, for example, Ni के साथ मैंने जोड़ा है, so this will become He, and half of He will become Nihi, Nihi, like Rajni, Rajnihi. E है तो ये ही बना, लेकिन हाफ ही, तो Nihi. Am I clear? So only this Visarga has a little bit variation in the sound depending upon which alphabet it is attached. Samyak va? Sarve Gnatavanta? Samyak Mahoday. Samyak. Agre gachhama. Now the 5th category I am talking about is called Plutaha. Interesting. Plutaha. Plutaha, when A and number 3 gives you A. A. Dirgha. In Vedic Sanskritam and many of the original script of Stotram, you will find it, there were, after this one line, there was another line also previously. Now in Devanagari it was compressed and numbers were used. Just imagine. Alphanumeric alphabets in Sanskritam. Mohoday, आपका mic on है, निर्मल जी. Alphanumeric alphabets in this thing. निर्मल जी, आपका ऑडियो ऑन है महोदय. आप खांसी खा रहे हैं, आवाज आ रही है. हाँ, अस्तु, कोई बात नहीं, by mistake, no problem. Now coming to this point is alphanumeric. My dear friends, the world's first language and the second language which uses numbers is Russian language. There are only 2 languages in the world which uses numbers in alphabets, with alphabets.
सो दिस इज गुजराती जितने भी है, डोंट कंसिडर दिस टू बी रू. हाँ, रूमाल नो रू नहीं समझता. इट इज नंबर 3 इन देवनागरी. नाउ अनदर एग्जाम्पल वी वुड से ई. ई ई ई ई ई ई E, E, E. Now there are rules for pluth. What is the rule for the pluth? Rule number one, it attaches only number 3, not number 4, not number 5. 2 क्या तो जरूरत नहीं है. We already have दीर्घ, so no problem about 2. No 5, 6, 7, no other number, only number 3 is added, and that too added only to the vowel and not to the consonant. This rule does not apply to the consonants. ये केवल ये 15 अक्षरों में ही applicable है. Whatever we saw just now, all that 15 alphabets, in that only these are possible. In again, out of that 15, not even in last 2, aha, तो में दीर्घ तो नहीं होगा ना. So you have to use your common sense. So out of that 15 also, only in 13 it is applicable, not in rest of them. Another example is O. So now O and 3 times. O, 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 O. Am I clear, everybody? आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिख रही है ना? All are comfortable with this screen? Size of the screen and everything? स्पष्टम दृश्यते खलु. अति उत्तमम, अति उत्तमम. अभी ये देखिएगा ओ, इसका बेस्ट एग्जांपल है. This what you see is a absolute word Om written in Vedic Sanskritam. ये वैदिक संस्कृतम है. And this is what is देवनागरी. काफी लोग इसको बोलते हैं ऊ के पीछे पूंछ लगाया और ये अर्धचंद्र वगैरह. Nothing of that sort, please. There are people who are pronouncing this wrongly. Oma, Oma. No, it is not Oma. It is Om. O, pluth. O, O. Ma, half. So, so Om. 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 Yes, in yoga abhyas, you have to stretch, but that is for the breath control. You have given an alphabet just for the breath control. वो अलग बात हो गई. But when you say Om Namah Shivaya, you cannot extend more. Om Namah Shivaya. Wrong. Wrong. So it is Om 3 times. Om. Om. Ma half. So, So there are 2 cases where the ma is half. One is in anuswar. The same sound is also when it is ma half. When to apply that and when to apply this, that we will learn ahead. उसको आगे देखेंगे. कभी वो यूज करेंगे और कभी ये यूज करना है, उसको बाद में देखेंगे. How many of you all know about आर्य समाज? आर्य समाज के बारे में कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था. हाँ जी. हाँ, थोड़ा सा. हाँ, थोड़ा गूगल कीजिए. हाँ, थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है. पर्सनल इंटरेस्ट है बिकॉज माय फैमिली ट्री, आई बिलोंग टू द सेम दयानंद स्वामी जी, महर्षि दयानंद स्वामी. उनके ऊपर जो सूर्य औरा होता है उसमें ओम इस तरीके से लिखा रहता है. ना देखिए महोदय, ये सब चीजें हैं ना, ये कहाँ पे तर्क नहीं होता. ये पूरा वैदिक संस्कृत के अल्फाबेट्स है. ये भ्रम में मत रहिए. अर्धचंद्र सूर्य का, ये चंद्र का मत कीजिएगा प्लीज. ये अल्फाबेट है अपने आप में महोदय, दीपक महोदय. ये अपने आप में. मैं ये कह रहा हूँ कि जो ओम लिखा है आपने, जो इसमें वो वाला जो साइन है उनके ऑरा में लिखा रहता है दयानंद सरस्वती. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. दैट इज व्हाट मैं ये कहता हूँ कि दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज में देवनागरी ओम इज यूज्ड, नॉट दिस वैदिक ओम.
So this is what I want to say. यस यस, थैंक यू थैंक यू। हाँ, सो ये जो हम करते हैं, देर यू आर यूजिंग इस वैदिक संस्कृत, एंड नमः शिवाय यू आर यूजिंग देवनागरी। अरे ऐसा क्यों करते हो यार? कंप्लीटली राइट इन वन लैंग्वेज ना, व्हाई यू वांट टू बाइफरगेट? So this is how it is. So by the grace of Almighty, I belong to the same family tree of Dayanand Saraswati ji. यानी हमारी family is following under the same tree. That is मेरा नसीब है। देखिए, दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज का संस्थापक थे, स्थापना की। स्थापना की, हाँ, स्थापना। और हम बिल्कुल योगा में पढ़े हैं, उनकी काफी महानता भी है उसमें। बिल्कुल है। और अग्निहोत्री जो बोलते हैं ना, हवन करना, दैट्स द रीजन आई एम ऑल्सो अग्निहोत्री। एवरी डे मॉर्निंग मेरा हवन होता है। तो आप सभी लोगों को मैं कहता हूं, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आंखें बंद कीजिएगा, खाली अर्जुन का नाम दीजिए, अर्जुन टेक अवे दिस प्रॉब्लम। दूसरे दिन हवन में सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। दैट इज अ चैलेंज। हाँ सर, आप, हाँ, हम सबकी विजुलाइज करके डालते हैं ना, क्या? सब स्टूडेंट को विजुलाइज करके डालते बोल रहे। सबके नाम लेता हूं मैं, सबके नाम लेते हुए, एवरी बैच का नाम लेते हुए, एट द एंड सभी अपना जो पूर्णावती होगी, पूर्णावती में those who have appeared, those who have not appeared also, those who have registered, सबका नाम लेके एक एक आहुति जाती है। गायत्री मंत्र की एक आहुति रहती है और महामृत्युंजय की एक आहुति रहती है। बहुत, दोनों ही बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल है भाई। अरे नहीं तो एक इंसान हार्ट अटैक और पैरालिसिस के बाद आपके सामने खड़े बैठ के लेक्चर लेगा क्या? बाईपास सर्जरी हुई है भाई, ये देखो पूरा वेन निकाला है मेरे हाथों से, इफ यू कैन सी। पैर से भी निकाला है, छाती पूरी चीर दी थी। उसके पहले पैरालिसिस हुआ था। ये सब आप ही लोगों की वजह से, मेरे आप लोगों के प्रेयर की वजह से, सब स्टूडेंट्स के प्रेयर की वजह से आज आपके सामने खड़ा हूं। और मां सरस्वती ने बोला, ए नाटक मत कर अर्जुन, चल चल काम पे लगो। पोस्टमैन, बहुत सारे लेटर और भी डिलीवर करने हैं, है ना? 25,000 में थक गए क्या? बोलेंगे सर, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ सॉरी, हम लोग बहुत भाग्यशाली है बोल रहे। नहीं नहीं, भाग्यशाली मैं हूं भाई। अब मुझे मौका मिला आप तक का पत्र लेके आने का। हाँ प्रभा जी, हाँ लक्ष्मी प्रभा। हवन इन द मॉर्निंग और इवनिंग? Yes, morning. I do it in morning. You can do it anytime, morning, afternoon, or evening. Okay. And in special occasion, it is also done in midnight. लेकिन generally we don't do it when we stay in a city. तो वो बोलते हैं कि क्या यार बाजू के फ्लैट में क्या भूत प्रेत चल रहा है क्या, तांत्रिक चल रहा है क्या? ऐसा सब लोगों का दिमाग ऐसा है। But so it is said so. Okay, but before that, पूरा there is a procedure, and I do not eat anything before I complete my havan. After I complete my havan, और हवन की अग्नि में मुझे चावल को पकाना पड़ता है। I have to take wet rice beads and I have to cook like symbolic cooking. Okay, it is a symbolic cooking, not actually cooking. Symbolic cooking, I have to keep it in after Purnavati, and that dana I have to keep it in my mouth, and thereafter I can eat anything. Okay. But anything does not mean anything, huh? Means vegetarian. Sattvic. सॉरी टू टॉक इन मिडिल। आपने अभी मेंशन किया दोपहर को कर सकते हैं, तो मेरी जानकारी में नहीं था। तो अगर आपको ठीक लगे तो आफ्टर द क्लास प्लीज, इफ नहीं, मैं क्लास नहीं लेता इसमें भगिनी। कौन सा क्लास आप पूछ रहे? क्लास मत लीजिए, हमारे क्लास के बाद आप थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में देंगे, आई वुड बी इंटरेस्टेड। नहीं, दोपहर को भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सूर्य जब तक रहेगा ना, इट इज सेड सो, सूर्य जब तक, बिकॉज वी आर अ ट्रॉपिकल पीपल। अभी प्रॉब्लम क्या आती है वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि वहां पे सन टाइमिंग आर वेरी लेस। तो क्या वहां पे कोई अग्निहोत्री होगा तो वो तो परेशान हो जाएगा। तो नहीं, यू आर अलाउड सनराइज टू सनसेट टाइमिंग, till that time you are allowed, and that is looking at the Indian subcontinent. आप कर सकते हो, तो दोपहर में भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर क्या है, आपको सबसे पहले
गायत्री की एक माला करनी है, और उसके बाद सामान्य तरीके से, कोई पंडितों की कोई इसकी जरूरत नहीं है, बट वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पेशल कोर्स फॉर दैनिक पूजा, दैनिक हवन एंड कर्मकांड। एंड कर्मकांड का जो कोर्स होगा दैट विल बी अफिलिएटेड विथ सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी। इट मीन्स एवरीबडी विल गेट द डिग्री फ्रॉम देयर, बट वी विल बी कंडक्टिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स। ये सब जरूरी है ना, ये सब जरूरी है ना, बिकॉज संस्कृत यहीं पे बोली भाषा आप जानने के बाद क्या करोगे, देन गो एट अ नेक्स्ट लेवल, अंडरस्टैंड द ग्रामर। देर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट आवर सेमिनार, मीन्स दिस one of the module, and that is Srimad Bhagavad Gita, which I will be starting by this year end. 700 shloks will be taught only as it is. Okay, क्योंकि ये पूरा इट इज रिटन इन ग्रामेटिक, मीन्स देयर आर संधि समास सब यूज करके श्लोक बनाए गए हैं। वो श्लोक का हम विभाजन करके वी विल ब्रेक इट एंड अंडरस्टैंड देम एज अ वर्ड। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। देयर आफ्टर, ऑन बेसिस ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंस, आपके जीवन के अनुभव के आधार पे, whatever knowledge you have or whatever way you understand the things, you have to write the narration of that sentence, श्लोक। So by the time आपके 700 श्लोक कंप्लीट होंगे, आप खुद अपनी भगवत गीता बनाएंगे, है ना? करना है ना सबको। सर, आप जो ये बताए जैसे यूनिवर्सिटी के नाम, वो इसमें क्या कोर्स है, थोड़ा बताइए ना सर इसका। दैट इज कर्मकांड, जो पूजा पाठ कराते हैं ना, पुरोहित जी। होते हैं, पुरोहित का कोर्स होता है पूरा। तो इसमें संस्कृत संभाषित होना जरूरी है जी। हाँ, तो ये सारी चीजें होंगी। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द प्लूत, इट इज द 5th अल्फाबेट। एम आई क्लियर टिल नाउ एट दिस पॉइंट? Yes, sir. Anybody having any questions? क्योंकि इसके आगे व्यंजनानी वी विल सी इट टुमारो। इट वोंट बी पॉसिबल, आज लेना पॉसिबल नहीं होगा, तो कल हम व्यंजनानी लेंगे। एंड नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये वर्णमाला है, ये वर्णमाला की आपको अलग से पीडीएफ फाइल मिलेगी। यू विल गेट एज सुन एज आवर वर्णमाला विल बी ओवर, नेक्स्ट डे you will receive the PDF file of Varnamala. Now there is a system. What is the system? For 8 days, you have to read every day. Everybody, you have to read each page loudly. Okay? उच्चै वदनम आवश्यकम अस्ति, यानी जोर से बोलना पड़ेगा, मन ही मन में मत बोलिए, not in your heart. You have to loudly read for 8 days, all the pages. And from 9th day, forever, you keep that book in front of you, open it, see the page, turn the page, see the page, turn the page, see the page, turn the page. Will you do that? I and my wife, even today we do. हम लोग आज भी करते हैं। That will create subconsciously, आपके फोनेटिक्स आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। ओके, तो ये आपको अलग से पीडीएफ मिलेगी। सो डोंट मेक नोट्स ऑफ दिस, ईच एंड एवरी स्लाइड। अगेन आई एम सेइंग, यहां पे कोई इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं, ऑल स्लाइड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसको समझे तो बाकी का तो बहुत ही इजी है। Did anybody find any difficulty in understanding this Varnamala till now? Swaraha, किसी को डिफिकल्टी हुई क्या? ना महोदय। अन्यत कोपी? मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ पूछिए ना महोदय। मुझे मन में एक शंका हो रहा है कि जैसे हम स्वरों में जैसे रू, उसके बाद जो वर्ण आया लृ,
हुर्लू। जैसे हाँ जैसे ल ल और रू जोड़ा जाता है उसमें, हाँ तो हाँ। ल और रू अगर जोड़ा जाता है तो हुर्लू ल तो नहीं, साथ में बोल रहे हैं, हुर्लू जोड़ा नहीं गया है, रू। हुर्लू। अच्छा, जी हुर्लू। जी जी। हाँ, आपने स्कूटर चालू करी है। हाँ, हाँ बराबर बराबर। हाँ। और एक समझा है चीज है। मैंने। हाँ हाँ बोलिए, हाँ पूछो राजगौर भाई, नहीं, पूछो समझा पूछो। हूँ मैंने। हाँ तो वहां पे रू जब बोलते हैं उच्चार, तो मुझे ऐसा लगा पहले, लेकिन अभी आपने समझाया तो समझ में आ गया, एक्चुअली क्योंकि प्रॉब्लम मैं। माइक में होती है, सही देखो, अब मेरे को माइक में प्रोनाउंस करना है, तो आपको तो थोड़ा भिन्न आएगा, इट इज वेरी जी कॉमन। ये आपने जी जो जी प्रश्न पूछा वो कुछ गलत नहीं है। जी। हाँ तो गलत नहीं है महोदय, आप डिस्टेंस पे नहीं हो, आप भी सुन रहे हो, तो शायद थोड़ा बाइफर्केशन आता है। दैट्स द नहीं, रीजन मुझे स्पोकन संस्कृत में इसका शब्द नहीं है। नहीं, प्रश्न मेरे को वहां पे ये था कि जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं, तो स्वरों में तो जैसे ये मैं समझ सकता हूँ कि ये लू जो है वो स्वर है, लेकिन ल दिखने में जो नहीं है ना। दिख रहा है वो हाँ व्यंजन दिख रहा है, ल जो व्यंजन दिख रहा है, हाँ तो हाँ। वो ल क्यों स्वरों में आया है, ऐसा नहीं मेरा नहीं, वो मानना है। एक्चुअली ऐसा मिक्सअप मत कीजिएगा, वो ल दिखता है लेकिन उर्लू का प्रोनाउंसिएशन, जी उर्लू जी का जी प्रोनाउंसिएशन है। जी हाँ तो जी। वो ल धन्यवाद। दिख, अल्फाबेट आपकी बात सही है, ल दिख रही है लेकिन वो तो व्यंजन है, लेकिन उसके नीचे हमने जो रुका, लेकिन वो एक अल्फाबेट अलग है, ल से जी अलग है। जी जी जी। हाँ धन्यवाद तो गुरु साउंड के लिए। नाउ जी। देर आर पीपल हु आर हैविंग प्रॉब्लम्स अबाउट प्रोनाउंसिंग सम वर्ड्स और अल्फाबेट्स। काफी लोग होते हैं जिनको कोई उच्चारण में, जैसे स हुआ, तो वेरी कॉमनली ये उच्चारण में डिफिकल्टी आती है, दे फाइंड डिफिकल्टी, एंड दैट इज वेरी कॉमन। एवरी पर्सन हैज, कितना भी परफेक्शन करे, वॉट एवर मे ही माइट बी परफेक्टिंग हिमसेल्फ, बट देर आर सम थिंग्स विच आर यू कैनॉट अवॉइड। सो फॉर दैट देर इज अ सिंपल एक्सरसाइज। अर्ली इन द मॉर्निंग, सभी लोगों के पास स्कूटर का लाइसेंस है ना? एवरीबडी हैज लाइसेंस एंड एवरीबडी नोज हाउ टू ड्राइव स्कूटर। सबको स्कूटर आता है क्या? यस यस। हाँ, सकीना को तो आता है, सकीना हाँ एकदम एक्टिव है, योगा अभ्यास भी करती है, उत्तमम। अन्यत सर्वे, भारती चौकसी। सर, हाँ मैं योग टीचर हूँ। आई नो यू आर योग टीचर, यस योग टीचर है। आपने पतंजलि से किया ना? यू आर सर्टिफाइड ना पतंजलि में से? मैंने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ से योग में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। अरे वाह, उत्तमम 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 भगिनी, अति उत्तमम। देखो पोस्ट ग्रेजुएशन किया उन्होंने, एमए किया योग में, अति उत्तमम। अन्यत सर्वे, स्कूटर चलाना आता है क्या? जवाब तो दीजिए, सर, हाँ या ना? नहीं जी नहीं गुरु जी। सर, सॉरी। No, sir. यस सर। अरे तो फिर कैसे होगा? स्कूटर तो आती है। इसमें क्या करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव टू गेट अप, उठना है, आपको मुंह धोना नहीं है, यू हैव टू नॉट वॉश योर माउथ, एंड यू हैव टू राइड स्कूटर। हाउ? वाइब्रेटिंग योर टंग इनसाइड। अभी तो स्कूटर चलाओगे ना पाटिल? आता सर जमेल होठों ना? को दिस सर इज आप जैसे इजियर। दिखा रहे हो ना वैसे नहीं चलता है हाँ वो। सॉरी। सर दोनों होठों को जमा के जैसे बच्चे लोग करते हैं ना ऐसे, वो वाली चल जाती है। नहीं वो आप वाला सर्वे नहीं है, वो वाला ये टंग को अंदर ही मुंह में आपको वाइब्रेट करना है। सर ये वाइब्रेट ही नहीं होती है, अटक जाती है, हम लोग की नो आदत प्रॉब्लम, नहीं 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 कोशिश कीजिएगा महोदय, डोंट वरी। हाँ जस्ट देखिए, हुआ। हुआ ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम लंबा खींचो, जितना हो रहा है उतना करो। र, र, चलेगा, नो प्रॉब्लम। स्लोली एंड स्टडीली यू विल फाइंड कि आप ज्यादा खींच सकते हो। ये टंग का वाइब्रेशन होना जरूरी है, इलास्टिसिटी। अभी इसका प्रॉब्लम क्या है आजकल के हमारे खाने में? फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड, हम पिज्जा वगैरह खाते हैं, सूप पीते हैं, उसमें अजीनोमोटो है, विनीगर है, ये सारी चीजें अपने टंग को स्टिफ कर देती है, कड़क कर देती है। अपार्ट फ्रॉम इट, सब्जी भी अगर खाते हो तो उस पे पेस्टिसाइड डाला गया है,
इसके सब खाने की वजह से अपने टंग में एक स्टिफनेस आती है, उसको लूज करना है, तो ये एक्सरसाइज की। नंबर 1। नंबर 2, देर आर पीपल, आप लोग के संपर्क में होंगे कि जो हैव डिफिकल्टी अबाउट टॉकिंग, दे स्टार्ट स्टैमरिंग, वो हकलाते हैं, उनको दिक्कत होती है, कभी कभी बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाते, ऐसा होता है ना काफी लोगों को। जी सर। आपके परिचय में होंगे कोई। आई गिव यू दिस टेस्टेड एग्जाम्पल एंड सोल्यूशन, और वो है राम रक्षा स्तोत्रम। राम रक्षा स्तोत्रम स्लोली एंड स्टडीली पाठांतर कीजिए, उसको पढ़ते जाइए। आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस। बंदा मेरे सामने बैठा था, इट वॉज ऑफलाइन क्लासेस गोइंग ऑन, एंड ही यूज्ड टू नेवर टॉक, नेवर आंसर मी, नेवर एवर आंसर मी। वन टाइम ही केम एंड ही सेड के सर सॉरी, आप बुरा मत लगाइए, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं बोला नो प्रॉब्लम, आप आके बोले, उसमें सोल्यूशन है। आई अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन इज राम रक्षा स्तोत्रम। उन्होंने 6-7 महीने तक किया। ही न्यू राम रक्षा स्तोत्रम एट द फर्स्ट प्लेस, बट ही स्टार्टेड अप्लाइंग इट डेली। रोज करने लगा। करीबन 6-7 महीने हुए होंगे। ही वॉज सिटिंग इन माई क्लास, एज सुन एज आई आस्क एनी क्वेश्चन ही वुड आंसर। सेकेंड टाइम आई आस्क द क्वेश्चन, ही यूज्ड टू आंसर। और मैंने उसके सामने देखा, ही जस्ट स्माइल्ड, मैंने भी स्माइल दिया, यानी हिज प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड फॉर एवर। डू दैट। सर ये टांग्स में स्टिफनेस होने की वजह से हुआ था शायद ना, टंग की स्टिफनेस में। और राम रक्षा स्तोत्रम में द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द होल श्लोक इज सच, स्तोत्र का ऐसा है कि विच विल क्लियर योर स्टैमरिंग, वो हकलाना बंद कर देगा आपका। कोई कोई लोग अचानक से हकलते, नॉर्मली दे कैन स्पीक, बट इन सम सिचुएशन दे स्टार्ट स्टैमरिंग, उनका भी क्लियर हो जाए। ट्राई इट आउट। So majorly, stotras have vibration, they connect you spiritually, but over and above, it is medical properties also, because it is pure science. Ha Purvi, vadatu bhagini. Sir, I don't have stammering, but I have a lisp. वो टंग से कभी साउंड स और उसका गलत निकलता है, तो स्कूटर चलाओ ना। हाँ, आई गिव यू चैलेंज। आप नेक्स्ट शिविर में यू विल बोलोगे कि नहीं सर बहुत फर्क पड़ा, एंड विद इन 2-3 वर्कशॉप्स यू विल स्टार्ट प्रोनाउंसिंग इट राइटली। And this is not a problem. You are having that problem. Don't be shy. There are millions of people who are having this problem. Rather, I would put it, every person has a problem with one of the alphabet. They have. Can't help it. So there are solutions. Whatever solutions I know, I will be exchanging with you all. Am I clear? इसी के साथ हम आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई एंड माई सेशन टुडे ओवर हियर। टुमारो अगेन प्लीज बी ऑन टाइम, बिकॉज देर आर नो वीडियोज टू बी सीन। डायरेक्टली वी विल स्टार्ट ऑन द टॉपिक। ओके, तो दोज हु हैव जॉइंड अस थ्रू यूट्यूब, आई थैंक यू ऑल, एंड प्लीज बी कनेक्टेड इवन टुमारो. That's my request. And even those who are on YouTube, if you want to interact, please join the live session. The links are already sent